Good evening students. So in our last video we see the components of web page and HTML introduction. So hope you are doing well. So let's start our topic, and our today's topic will be text formatting element. So before starting text formatting element, पहले हम देख लेते हैं कि नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर HTML का कैसे बनता है. ठीक है, तो नॉर्मल HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है. सो व्हाट वी नीड टू डू फर्स्ट, we need to first open our notepad. So from where you are going to search, in a search bar just search the notepad and open the notepad, right? So here I already opened the notepad. I open it and let's start our code. तो सबसे पहले हमें, एंड HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, तो हम कैपिटल में लिखे स्मॉल में लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता है. तो कुछ जगह पे हमें बस ध्यान देना है. तो पहले देखते कोड स्टार्ट करते हैं. तो अपने को एंकर ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करना है. ब्रैकेट ओपन किया मैंने, एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉक टाइप HTML, ये मैंने कोड लिख दिया HTML, और वी कैन राइट HTML5 whatever you want to. So our first topic is to write some text and let's describe in a way one by one, और फिर हम उसको थोड़ा सा फॉर्मेट करेंगे. देखते हैं उसमें अपन क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं. तो पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें पहले ऐड कर लेते हैं. तो मैंने HTML डॉक टाइप HTML5 लिया, टैग क्लोज किया मैंने. फिर HTML5 पर हमें क्या लिखना होता है, हेड लिखना होता है. तो मैं हेड टैग ओपन करा, और हेड के अंदर क्या आता है, टाइटल आता है. तो थोड़ा सा अच्छा सा इंप्रेसिव लिखने के लिए मैं थोड़ा स्पेस देके टाइटल लिखा, TITL टाइटल. और टाइटल में मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया माय वेब पेज. मैंने माय वेब पेज लिखा और मेरा टाइटल हो गया लिख के. टाइटल शुड बी शॉर्ट एंड कंसाइज, और टाइटल क्लोज कर दिया. तो एक एक करके अपन रन करेंगे कोड, ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो. तो मैंने हेड को क्लोज कर दिया. हेड को क्लोज करने का वेरी important thing, HTML क्लोज करना है हमें. So we can see that in our last video we learn container tag and empty tag. So we can see head is a container tag, right? It contains something in it. HTML is a container tag, right? We open, we close, and it contains something in it, right? So let's see it will run or not. Before that हमें इसे सेव करना है. So file and save as, and I already named this as my first web page, and I फिर मुझे उसका एक्सटेंशन देना है. तो .htm, or we can say .html, whatever extension you want to give, you can give HTML or HTML. So and after that you just need to click on save. So I clicked on save. So here you can see my first web page is created. So I just double click on it and open. तो जैसे मेरा टैब ओपन होगा, सो यहाँ मुझे दिख रहा है एकदम ऊपर, डिड यू सी माय वेब पेज इज रिटन ओवर देयर. सो वेयर वी राइट अवर माय वेब पेज, हमने इसे टाइटल में लिखा था. तभी इसका आपको आइडिया आ गया रहेगा कि टाइटल में जब हम लिखते हैं तो वो चीज़ वेब पेज पे अपने कहाँ लिख के आती है. ठीक है, सो लेट्स सी मोर टैग. Now I want to give some background color to my web page. So we need to first open body tag, and in body we need to write body color and background color. For background color we need to write it as BG color. अभी मुझे कलर देना है जस्ट येलो. सो येलो. मैंने टैग बंद किया और टैग को मैंने बैकस्लैश से क्लोज कर दिया. And now we don't need to save again and again, we just need to save the file. Save the file and just run or reload the page. So did you see the yellow color is coming? Okay, so let's format our text. So here are different formatting elements for our text. So the very first one is bold. B stands for bold. We display text within bold. So let's see how it's going to work. In our body we need to write all this thing. So I write something. For say I write hello, how are you. ये मैंने hello how are you लिख दिया. अब मुझे इसको क्या करना है, रन करना है. बट
इट शुड बी इन बोल्ड। तो मैं क्या यूज करूँगा, टैग स्टार्ट, जो मैंने फ्रेज लिखा हो, जो सेंटेंस लिखा हो, उससे पहले मैं टैग ओपन करूँगा बोल्ड का, एंड जहाँ पे मेरा सेंटेंस खत्म हो रहा है मैं वहाँ पे बोल्ड टैग क्लोज कर दूंगा गिविंग स्लैश बैक स्लैश। तो यहाँ पे मेरा दिख रहा है आपको, ये बोल्ड टैग ओपन एंड बोल्ड टैग क्लोज हो गया। अभी जो भी मैंने सेंटेंस लिखा हूँ वो भी बोल्ड में होगा। तो आई सेव दिस फाइल and just rerun this. So did you see it will appear in a bold? So let's see it works or not if I write bold over here. See bold and मैं इसको हटा देता हूँ, सेव करता हूँ इसको, कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते। मैंने इसको सेव किया, मैंने इसको रन किया, दिख रहा है आपको ये पूरा बोल्ड में रह गया क्योंकि मैंने यहीं तक बोल्ड टैग रखा था, यहाँ पे ओपन किया था हेलो से पहले और आर के बाद क्लोज किया था, और यू के ऊपर मैंने कुछ भी फॉर्मेट नहीं दिया था, तो यू सिर्फ सिंपल फॉर्मेट में आ गया। समझा? अभी नेक्स्ट टैग है अपना आई विच इज इटैलिक, इटैलाइज द मैनर लाइक हेलो विच इज रिटन ओवर हियर। सो लेट्स सी द डिफरेंस। ओके, so I write something in italic, so it stands with I write I am doing good, and I just close the italic tag and just save the file with Ctrl S, or you can save it from here. Let's see it will run or not. Just refresh the page. Yes, did you see the text which I write, it will appear in italic. Okay, but I want this, both the sentence should become in a different line. So what I need to do, I just need to write here where my first sentence get end, BR. BR stands for break, and I don't need to close BR tag. मुझे BR tag को close करने की जरूरत नहीं है because वो empty tag होता है, तो उसको close करने की जरूरत नहीं है। Just write BR tag wherever you want to space it. So Ctrl S, refresh the page, and here we go. Okay, so let's learn about our next tag which is U. U means underline the tag. Okay, so let's write something in U tag. So I open and close the U. I write something like my web page is working. Okay, so I close the underline tag and just save it and rerun the page. So did you see whatever I write, it appeared in a underlined way. Now what I want to do, I want to do that this should become in a new line. So for that I need to just write BR, that's it. But I want कि ये जो है वो अंडरलाइन में तो आ रहा है बट बोल्ड में भी आए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे बोल्ड टैग लगा दूंगा और यहाँ पे बोल्ड टैग को मैं क्लोज कर दूंगा। अब देखते हैं ये रन करता है नहीं, यानी अब मैंने इसको क्या किया, अंडरलाइन तो रखा हो बट साथ ही साथ ये बोल्ड भी होना चाहिए। सो लेट्स सी इट विल रन और नॉट, एंड हियर वी गो। दिखा? तो ये रन भी हुआ और बोल्ड भी हुआ और साथ ही साथ इसमें अंडरलाइन भी आ गया बिकॉज हमने दो टैग एक साथ यूज किए। सो सेम थिंग वी कैन डू फॉर आइटैलिक, बोल्ड टैग एंड बोल्ड टैग। ओह सॉरी, मुझे क्लोज करना था, जस्ट सेव इट। और यहाँ पे वी कैन सी आवर आउटपुट, जो आइटैलिक में मैंने लिखा था वो भी क्या हो गया, बोल्ड हो गया। आई होप सबको समझ रहा होगा। Let's see our next tag, small. Small is very simple. We just need to write in our text format. We should appear in small. So just write small tag and write something whatever you want. My name is Umar, and just close the small tag and save it, and let's see it will. Sorry, let's see here. So you can see the difference. Here my name is Umar is written, and here my web page is working. Did you see the size of both the sentence, right? So it will appear as small. So I add BR tag.
so it will appear in a new line. Save my file and rerun it. Now you can see the difference between this 3 sentence and this sentence. All the above 3 sentences are appeared in a large and this appear in a small because I write small over there. So let's learn our new tag. देखते हैं subscript and superscript. This is my favorite tag. Let's see how it goes. First I will write the code and let's see you are able to distinguish between subscript and superscript. Let's see how it works. So I write something formula for water is H. I write H and I write soap. I write 2. I close soap and O. Okay, I just फर्स्ट मैं यहाँ पे ब्रेक दे देता हूँ ताकि ये न्यू लाइन में अपीयर हो, वरना थोड़ा मैसअप हो जाएगा। मैंने क्या लिखा यहाँ पे फॉर्मूला फॉर वाटर। वाटर का फॉर्मूला हम सबको पता है H2O होता है, तो मैंने H लिखा, सबस्क्रिप्ट डाला, 2 लिखा और सबस्क्रिप्ट को क्लोज किया और लास्ट में लिखा O। ठीक है, मैंने इसको सेव किया एंड लेट्स रीरन द पेज एंड हियर वी गो। आई होप यू गेट what the function of subscript. So subscript just write whatever we need to write in at lower portion. Did you see? Now I want to write some max equation. I do BR over here first. Okay, quadratic equation is I write x. So x square. So for x I write x, for square I write soup. So here you go, square. I just want to write x square only. So save the file and rerun. So did you see x square? The 2 which appeared at the above portion of x. So this is how subscript and superscript work. Hope you get the difference between subscript and superscript. चलो अभी देखते हैं हम। सबस्क्रिप्ट हो गया, सुपरस्क्रिप्ट हो गया, अब है इंसर्ट एंड डिलीट एंड मार्क। इंसर्ट इज नथिंग बट एनीथिंग दैट अपीयर्स विद इन द एलिमेंट्स विद डिस्प्ले एज इंसर्ट टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल मैंने कोई वेब पेज बनाया और वो वेब पेज बनाने के बाद क्या हुआ कि मैं कुछ इंसर्ट करना भूल गया, तो जस्ट वो पैराग्राफ में आप वहाँ पे इंसर्ट टैग ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद कुछ भी एलिमेंट में इंसर्ट कर दूँ वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा माय वेब पेज इज वर्किंग और मैं कुछ लिखना भूल गया, तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। इंसर्ट मैंने ऐड किया, मैंने लिखा नॉट और मैंने इंसर्ट को क्लोज कर दिया। अब यानी मेरा एक्चुअल कोड था कि मुझे लिखना था कि माय वेब पेज इज नॉट वर्किंग और मैंने लिख दिया माय वेब पेज इज वर्किंग। तो मैं क्या करूंगा, मुझे नॉट ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट से मैं वहाँ पे नॉट ऐड कर दूंगा। तो लेट्स सी अब हमारा इंसर्ट वहाँ पे हुआ है या नहीं। सो हियर वी कैन सी नॉट इज एडेड इन माय सेंटेंस। सो दिस इज हाउ इंसर्ट वर्क। नाउ लुक एट केयरफुली, आई विल जूम इट। Sorry, I forgot initially. Now look at carefully. I want to delete this. I am doing good. Let's see I am able to do it or not. So for what does delete tag means? Anything that appears within delete element, it will delete it. So I write delete tag over here. I am doing good. So del delete, and I need to close this delete tag. So del delete, I close it, I saved it, and just rerun. So this is how delete tag work. Did you see? It will वहाँ पे उसने एक लाइन मार दिया है जिसकी वजह से अपने को पता चलेगा कि वो सेंटेंस वहाँ से डिलीट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये फॉर्मूला में जो है वाटर का H2O और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में X2 हाईलाइट होके लिखना चाहिए। जैसे अपन लिखते हैं ना फॉर्मूला लिखते हो, फॉर्मूला को एक बॉक्स में डालते हैं नोटबुक में लिखने के लिए, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि जब मेरा वेब पेज पे मैं कुछ करूँ ऐड, तो कोई चीज़ मेरी हाईलाइट होके लिखना चाहिए। तो लेट्स सी वो वर्क करता है या नहीं। तो मैं चाहता हूँ मेरा H2O हाईलाइट हो, तो मैं जहाँ से मैंने H2O स्टार्ट किया मैंने वहाँ पे लिखूँगा मार्क, और जहाँ पे मेरा H2O का कोड खत्म हो रहा है
वहाँ पे मैं लिखूँगा मार्क को क्लोज। तो मैंने यहाँ पे मार्क को क्लोज कर दिया। एंड सेम थिंग आई विल डू फॉर एक्स स्क्वायर। मार्क मैंने यहाँ पे क्लोज किया और x से पहले मैंने मार्क को ओपन किया। अब मैं सेव करता हूँ। वी कैन सेव इट फ्रॉम हियर ऑल्सो। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ इसे। सेव यहाँ से भी कर सकते हैं और कंट्रोल एस से भी। It's not working. Let's see what's my mistake. Okay, highlight the element, right? So let's see what's my mistake over here. Okay, sorry. Okay, mark. मुझे पूरा इनिशियल से लिखना चाहिए था। मार्क मैं सेव करता हूँ और ये पहले मैं एस्ट्रो वगैरह ही करता हूँ, उसको हटा देता हूँ। सेव। ओह आई अंडरस्टैंड। एक्चुअली मार्क जो वो येलो कलर में होगा, जब मेरा पहला वाला कोड भी राइट था। सॉरी तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो ये वापस से आ जाएगा। मेरा पहले वाला कोड भी राइट था। मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूँ क्योंकि वो जो मार्क है वो येलो कलर में ही अपीयर होता है। देखते हैं अभी। मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, उसको येलो से मैं ग्रीन कर देता हूँ। अभी देखते हैं वो होना चाहिए। ये देखिए वो पहले येलो कलर दिखता है, उसकी वजह से आपको बता रहा नहीं था क्योंकि मार्क जो है वो येलो कलर से हाईलाइट होता है। I hope you understand all the elements of text formatting, and here it is written br tag is used to specify the line break, and we already use br जो है वो न्यू लाइन में ऐड करने के लिए सेंटेंस को यूज होता है। So for that this is your homework. You need to write the program code and please submit your answer on my Telegram channel which is available and the link is given in my description. So if you have any doubt, any query, please do ask me on my Telegram channel. Thank you.